Friends, this is Vikram Prasad Baliawala in USA or America. In this video, I have presented what is bone scan or bone density scan and why it is done in case of many people, senior people, male, female, cancer patients, normal patients, because bone density is very important. Bone actually consists of, it looks like a solid mass, but actually it is not. If you see a chicken bone, long bone, you'll notice that the outer cortex of the bone may be little solid, but inside is very spongy. And in the middle, there is a cavity which is filled with bone cells, many kinds, white blood cell, red blood cell, platelets, and so on and so forth. But that is in the middle of the bone. And I wish you look a chicken long leg to compare with your own leg. This is important because it tells how much chance for you to have fracture will be in your life depending on your age, medical condition, male, female, children versus very healthy people. Even the race, like white people, will have chance for having more fracture of the long bone, hip bone, than the black people or Asian people. But again, this is a very normal phenomenon which everybody should understand, because I had mine done and I thought that I must tell this how it is done and what is the meaning of that. At the end, you'll see how the bone texture looks very spongy in the middle, and there is a constant formation of the bone and loss of the bone in the middle. And in other words, there is a turnover of the bone over years, depending what we eat, how much is calcium, phosphorus, and or other minerals. In my case, the 10-year probability of major osteoporotic fracture is 6.7%, and for hip fracture is 2.9%. So if you compare with yours or with other people, the whole idea is how to avoid the fracture. And the doctor may recommend, number one, to take healthy diet, milk, cheese, cottage cheese, and other natural food or artificial food, including enough calcium, drinking of milk, etc., or even medication. Now, I have tried to take more calcium, but here I want to tell you that my blood test for calcium and phosphorus is normal, and blood tests are all normal, except that I have a very chronic disease where my hemoglobin is slightly low, not very bad. So you must have the blood test done for many chemicals, white blood cell, red blood cell, platelets, and then call chemistry test, which gives you all the chemicals that are very important to know. So in this video, I'm only showing how it is done. Now, sometimes it is confusing bone density. What is bone density? Bone means haddi, or bone everybody knows. Density, how compact the bone is. And at the end, you will see some photo where I have shown density normal, and then when there is a loss of bone due to certain diseases or aging or male versus sex, female sex. So I will tell that everybody who is seeing my video, please know about your bone
and blood test results. Have the X-ray done as necessary. Here I want to say I try to take extra calcium and it didn't suit me. And so we'll see what doctor tells. Now, usually a leg X-ray, hip X-ray, and left arm scan is done as shown here. जो मेरे हिंदी स्पीकिंग भाई हैं, मैं ये कहूँगा कि आप ज़रूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि जो बोन है वो सॉलिड नहीं होता है, लगता है सॉलिड लेकिन वो केवल बाहर में होता है, कुछ जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, लेकिन भीतर में वो बहुत सॉफ्ट होता है, स्पंज की तरह होता है। और लॉन्ग बोन में अगर लेग को देखें, आर्म में देखें, तो भीतर में खाली होता है जगह, जिसमें कि जिसे कहते हैं बोन मैरो वहाँ होता है, जिसमें कि बॉडी प्रोड्यूस करता है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और बहुत सी चीज़ें। तो ये बहुत ज़रूरी है कराना। और क्या होता है कि जो लेने के बाद में जो रेडियोलॉजिस्ट है उसको पढ़ते हैं और वो देते हैं कि 10 ईयर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर क्या है। मेरे केस में 6.7% है, मैं तो, और 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ हिप फ्रैक्चर है 2.9। तो ओल्ड एज में किसी को हो सकता है, ये कोई पैनिक की बात नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए ताकि आप दूध पी सकें, चीज़ वगैरह खा सकें और जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह मिल सके। तो मेरा पर्पज़ यही है इस वीडियो को दिखाने का कि आप इसे समझिए, इग्नोर नहीं कीजिए। और अमेरिका में ये टेस्ट एवरी 2 ईयर्स, जो लोग 60 ईयर्स या ओल्डर है, मैं तो 81 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो इसलिए मेरा टेस्ट बराबर होता है। और जो डॉक्टर जो केयर करते हैं वो बराबर बताते हैं कि हाँ 2 साल हो गया, इसलिए आपको ये कराना ज़रूरी है। देखिए, मैं पहले 7-8 वीडियो डाल चुका हूँ प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। मुझे प्रोस्टेट कैंसर 5 साल पहले डायग्नोस हुआ, जिसके लिए हम दवा खाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये सब ब्लड टेस्ट हो और ये जो स्टडी हो एक्सरे का और स्कैन जो इसमें दिखाए हैं, ये ज़रूरी है कराना। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो आपको डॉक्टर बोले वो करें, ताकि आपको फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि फ्रैक्चर होने से बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है और हीलिंग में बहुत टाइम लगता है। तो मैं यही कहूँगा, देखिए यहाँ पर ये हेल्दी बोन दिख रहा है आपको, हर एक बोन के बीच में होती है थोड़ी सी जगह। और ये देखिए जो है 4 ग्रेड है ऑस्टियोपोरोसिस का। तो आप देख रहे हैं कि बोन अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा, बीच में थोड़ा थोड़ा होल होता है और उसी में बोन होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।